Okay. So, good evening, everyone. This is Samarth, and I think we'll be continuing our quadratic equations part. And I'll brief you up a bit. In the past lecture, we studied the algebraic approach, and now we'll study the graphical approach. So, let's see what the graphical approach says. So, if there's a quadratic expression given as y is equals to ax square plus bx plus c, then we know that we can write the y expression in this form as well. Okay. So what does this graph represent? So if we plot out this graph represents a parabola with vertex minus b comma 2a and d minus d comma 4a. And the axis of the parabola is minus b by 2a. So there could be multiple depictions, but an average or somewhat this is the depiction. This is the parabola, the standard parabola, and the uh, vertex looks like minus b by 2a, comma minus d by 4a, and the axis, sorry, yeah, and this is the axis. Okay, so moving on, let's see. I think we did discuss the depiction of the graph on the basis of a and b, but let's do that again. So if a is greater than 0, the parabola opens upward, and opens upward. By opens upward, we mean is this is opens upward and this is opens downward. So if a is greater than 0, then the parabola opens upward, and if a is less than 0, the parabola opens downward. Okay. So the parabola intersects the x-axis at the point corresponding to the roots of ax square plus bx plus c is equals to 0. We have already discussed this. What do we mean by roots? When y becomes 0 or f at that x becomes 0. It is same. It has a similar meaning, right? इन दोनों का मतलब same है. तो y जब 0 होगा उस x को हम रूट बोलेंगे. ओके, नाउ डिस्कसिंग डी कि डी जो हमारा होता है वो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा. तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो पैराबोला इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे करेगा और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे करेगा. अगर हमारा डी जीरो होता है तो पैराबोला एक पॉइंट पे टच करेगा एक्स एक्सिस को. ठीक है. लाइक एक्स एक्सिस वुड इट्स बी टैंजेंट वर्टेक्स के ऊपर और एक ही रूट होगा उसका. अपन बोलेंगे एक ही जीरो है या फिर एक ही रूट है, और वो क्या होगा, माइनस बी बाय टू है. और अगर डी लेस देन जीरो है मतलब इमेजिनरी रूट्स है, और इमेजिनरी का मतलब आपका पैराबोला कभी एक्स एक्सिस को टच कर ही नहीं रहा है. या तो वो हमेशा पॉजिटिव है या तो हमेशा नेगेटिव है. अगर ए आपका पॉजिटिव है तो आपका पैराबोला हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अबव द एक्स एक्सिस रहेगा मतलब. और अगर ए नेगेटिव है मतलब पैराबोला हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा, यानी कि हमेशा नेगेटिव रहेगा. ओके. सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, and alpha and beta are the roots of f of x. So ये काफी सही सही से सारी तरीके से समझ सकते हैं अपन. जैसे कि अगर आपका a ग्रेटर देन जीरो है और d भी ग्रेटर देन जीरो है, देन f of x वुड बी ग्रेटर देन जीरो. f of x कब कब जीरो से बड़ा होगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर अल्फा तक एंड बीटा से लेकर इंफिनिटी तक, सेइंग दैट अल्फा इज स्मॉलर देन बीटा. ओके. Similarly, अगर आपका a less than 0 है and d greater than 0 है, then f of x would be negative from minus infinity to alpha union beta to infinity, where again beta is greater than alpha. Okay. अगर हमारा a greater than 0 है यानी कि ओपन अपवर्ड होगा और d 0 है, then a की रूट होगा हमारा. और मतलब दो रूट्स बोल सकते, दो रूट्स नहीं होते, दोनों इक्वल होंगे तो एक ही रूट होगा. और f of x हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल x बट एक x के अलावा जो कि अल्फा है. अगर x एफ ऑफ अल्फा हो जाता है तो उस पॉइंट पे एफ की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू जीरो है. राइट. मूविंग ऑन, अगर एफ आपका नेगेटिव है एंड डी जीरो है, इट इज वेरी सिमिलर. एफ ऑफ एक्स हमेशा नेगेटिव रहेगा सिर्फ एक पॉइंट के अलावा, अल्फा. उस पॉइंट पे एफ ऑफ अल्फा क्या होता है, जीरो. आई थिंक ये काफी अंडरस्टैंडेबल है. क्वेश्चन करके देखते हैं. द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y is equals to x square plus bx plus c is shown in the figure below. Comment on the sign of the below quantities. Okay. तो देखते हैं अपन, ये ग्राफ दे रखा है. तो सबसे पहले तो डाउनवर्ड ओपनिंग का ग्राफ है तो a नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा. ठीक है. उसके बाद अपन अगर देखें तो x इज इक्वल्स टू जीरो पे y पॉजिटिव है, यानी कि c पॉजिटिव है. यहाँ पे क्या होगा, जीरो का c है क्या, अरे रेज इट राइट एंड अगेन, ये क्या है,
ये वाला पॉइंट क्या है, 0, C। तो सी पॉजिटिव है क्योंकि वो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो ए नेगेटिव सी पॉजिटिव। ओके, अब ये वाला पॉइंट देखना है अपन को। तो ये वाला पॉइंट क्या होता है, -b/2 है। तो -b/2 है नेगेटिव है, यानी कि b/2 है पॉजिटिव है। बट ए नेगेटिव है तो बी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो अपने पास तीनों के आ गए वैल्यूज। ठीक है, अब हम साइन देखते हैं। अब अपन को पहले पूछा B-C का साइन, तो अपन को इसमें ये निकालना पड़ेगा कि बी और सी में से कौन ज्यादा पॉजिटिव है और कौन कितना नेगेटिव है। ठीक है, तो अपन इसको भी देखते हैं। देखिए, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं जो सम होगा, सम आप देख के समझ सकते हो, इट्स नेगेटिव। सो b/a नेगेटिव है। ठीक है, अपन को ये पता है। उसके अलावा एक और चीज अपन कर सकते हैं कि जो आपके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, दैट इज c/a, ये भी नेगेटिव है। तो c/a इज ऑल्सो लेस देन 0। ये चीजें हो गई। अब अपन को सब्ट्रैक्शन निकालना है ना b-c का। तो देखते हैं b-c कैसे निकालेंगे। सो अपना अपन को पता है a b इज नेगेटिव एंड c इज पॉजिटिव। तो नेगेटिव में से अपन ने कुछ पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट किया तो नेगेटिव रहेगा। तो a दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव रहेगा। उसके बाद b देखते हैं, bc का मल्टीप्लीकेशन। सो b इज नेगेटिव, c इज पॉजिटिव, तो ये भी नेगेटिव होगा। उस उसके बाद C-A, सी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है। पॉजिटिव में से कुछ नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है। उसके बाद AB², बी नेगेटिव है तो बी का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ए नेगेटिव है तो नेगेटिव। देखते हैं आंसर्स क्या है। नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y is equals to x square plus px is situated so that the two arcs lying between the rays y is equals to ax and y is equals to 2x. ठीक है, these two arcs are projected onto the y axis. Okay, find the difference between the length. Okay, so ये काफी आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर अपन को डायरेक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट्स देखना है, तो अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स देखें y इज इक्वल्स टू एक्स के, तो अपने पास हो जाएगा x² प्लस p-1 का x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो इसके जो दो पॉइंट्स होंगे, ये वाले कर्व के दो जो सॉल्यूशंस होंगे x1 और x2, इस केस में क्या होंगे, इस केस में होंगे x3 एंड x4। इसके रूट्स है x3 और x4। ठीक, नहीं, गलत हो गया। लेट्स इरेज इट अप अ बिट। इसके रूट्स है x1 एंड x2। ठीक है, अब दूसरे वाले के रूट्स क्या होंगे, प्लस p-2 प्लस q इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स है x3 एंड x4। राइट, वी गेट टू रूट्स। अब हमारे को डिफरेंस निकालना है, राइट। तो अपन को निकालना है एस आर। सो व्हाट इज एस आर? एस आर इज x4 माइनस x3, सॉरी, और एक्स आर इज x4 माइनस x2 whole subtracted by x1 minus x3. This is done, and now let's solve it up. So हमारे पास क्या बचता है, x4 प्लस x3 माइनस x1 प्लस x2। तो हमें पता है x4 प्लस x3 क्या है, p-2 का नेगेटिव माइनस नेगेटिव ऑफ p-1। सो दिस गिव्स अस 1। 1 आएगा आंसर इसका। It's a very basic question. They just try to confuse us. It's basic application of sum of roots and product of roots. Okay, moving on to the next part. Next we have is theory of equations. So let's do समझते हैं क्या होता है theory of equations. So let's consider
कि अल्फा बीटा एंड गामा रूट्स है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो के। ठीक है, नाउ इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ओके, नाउ वी डिस्ट्रीब्यूटेड, सो व्हाट डू वी गेट, कि जो सम होगा रूट्स का वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, सी बाय ए। अल्फा बीटा गामा क्या होगा, माइनस डी बाय ए। ओके, it is very easy to understand. I'll tell you how. You can always repeat minus sign, मतलब consecutively odd पे माइनस साइन लगाते जाओ। जब एक बार में सम लिया है तो माइनस की पावर वन हो जाएगा, जब दो का लिया है तो माइनस की पावर टू हो जाएगा, जब तीन का सम लिया है तो माइनस की पावर थ्री हो जाएगा। दैट्स हाउ यू डू इट। ओके, देन सिमिलरली फॉर फोर ऑल्सो, अगर इवन का रूट का सम कर रहे हैं तो माइनस सी वैसे रहेगा। सॉरी, हाँ इवन का कर रहे हैं तो माइनस का उसका इवन पावर लगा देंगे माइनस की। ऑड नंबर ऑफ रूट्स का सम कर रहे हैं तो माइनस की पावर ऑड कर देंगे। इट इज एज सिंपल, इज एज सिंपल एज दैट। Okay, so let's move on and see another question. So for ax square plus bx plus c is equals to 0, x1 and x2 are roots. Find the value of ax1 plus b to the power minus 3 plus ax2 plus b to the power minus 3. ओके, सो हमें एक चीज पता है कि ए एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होगा। तो एक्स वन अगर निकाल ले तो ए एक्स वन प्लस बी एक्स वन, सॉरी बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अपन को ये पता है, अपन को ये भी पता है कि बी बाय ए की वैल्यू क्या है। बी बाय ए की वैल्यू है एक्स वन प्लस एक्स टू, but with a negative sign here. So minus b by a is equals to x1 plus x2, ये पता है। Then now let's see what the question is saying. Also is there something else that we can write? I think there's a problem here. I'm not getting this question. We'll skip this question for a minute and I'll get back later on in the upcoming lectures. Because how can this be equal to this? So there is some issue here. We'll see, look at the question later on. Let's move on to the next question. What do we have here? If two roots of the cubic equation x cube plus bx square plus qx plus r are equal in magnitude but in opposite sign, find the relation between p q r. सो क्या दे रखा है, दो रूट्स जो है वो इक्वल है बट अपोजिट साइन के। तो एक हो गया अल्फा, एक हो गया माइनस अल्फा और एक हो गया बीटा। तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, बीटा हो जाएगा। सो बीटा इज माइनस पी, राइट। एंड नाउ वी हैव माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा वुड बी इक्वल टू माइनस आर, उसके बाद माइनस अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्यू। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्यू टाइम्स बीटा इज इक्वल्स टू माइनस आर, राइट। and now beta is minus p, so pq is equals to r is the relation that we get. Okay, very easy application of sum and root. Let's move on to the next question. Okay, so if the roots of the quadratic equation are equal, then prove. Okay, if the roots are equal, so with simply ना determinant is zero. और वैसे भी कर सकते हैं कि टू अल्फा और अल्फा स्क्वायर, so टू अल्फा is equals to b minus c with a negative sign, so it becomes c minus b, a minus b, and alpha square is c minus a upon this.
तो हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है ना, तो अल्फा स्क्वायर कर देता है। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू जाएगी सी माइनस ए माइनस बी। ओके, so it's square here, not 4. So 1 by 4 c square plus b square minus 2cb upon a minus b is equals to c minus a. So let's take it there. What we get here is b square plus c square minus 2cb is equals to 4 times of a minus b c minus a. So 4 times ac minus a square minus bc plus ab. So I don't think we'll be able to cancel any of it. Let's check out the solution if we get a better way out. Okay, so okay, they have used a very interesting theorem here, guys. Very important, and I'm really sorry that I forgot this application of the theorem. Let's see the theorem. What the theorem says. I might have underlooked that this is the condition, and this is very important, guys. They have multiple applications of this. That if the sum of the coefficients is equal to 0, then the root is 1. One root has to be 1. I'll tell you why. Because if you directly put x is equals to 1, you are getting 0, right? So if the sum of the coefficient is 0, then one root has to be 1. So we missed this condition. If we had applied this, our question would have been really easier. So let's remember this and see how do we go about it. If they both are equal, then if one अगर एक रूट वन है तो अपन कर सकते हैं सॉल्व। अपन को पता है 1 + अल्फा इज इक्वल्स टू सी माइनस बी बाय, और दोनों इक्वल है तो ये दूसरा रूट भी सेम होगा, दूसरा 1 होगा। तो 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी। तो हो जाएगा 2a माइनस 2b इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस सी। तो ये हो जाएगा, let's take it this side. So 2a is equals to b plus c. Okay, very easy to understand. Just एक important theorem है कि यार जब कोएफिशिएंट का सम जीरो होता है, इट्स वेरी लाइक लॉजिकल आल्सो। इफ यू पुट f of 1 here you're getting a zero, so remainder theorem से या factor theorem से you can easily say that 1 is the root of the equation. Now moving on, if the roots of p this has equal roots, then proof. Again, is this problem is also very similar to the previous problem. Here also the roots are so one root is one root as one. What I'm saying, एक रूट जो है वो वन तो होगा ही सही। आप इसमें डाल के देख लीजिए, पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस आर पी minus QR. So this gets cancelled, this gets cancelled, this gets cancelled. So we get 0. अगर equal roots है तो दोनों roots 2 है, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, let's see. We can write this upon Q minus this is equals to negative of this is 2. So we get PQ minus QR is equals to 2 times of PQ minus 2 times of PR. सो इसको कैसे करेंगे, इसको अपन यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, तो हो जाएगा 2PR इज इक्वल्स टू PQ प्लस QR। वी गेट इट। तो ये अपना बन गया हार्मोनिक प्रोग्रेस, हार्मोनिक मीन, एंड वी गेट दिस। ओके, moving to the next question, what we have, just a minute. We have alpha, beta, gamma roots of the cubic equation, then find the value of this. So let's see what does it look like. So summation of alpha minus beta's whole square. So what do we mean by this is अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। दिस गिव्स मी 2 times of alpha square
plus beta square plus gamma square minus 2 times of alpha beta, beta gamma, and gamma alpha. ठीक है. अब how can we write this? We can write this as alpha plus beta plus gamma whole square minus 2 times of alpha beta, beta gamma, and minus 2 times of gamma alpha. And now if we take this out of bracket, what do we get? 2 times of alpha plus beta plus gamma whole square minus 6 times of alpha beta, beta gamma, and gamma alpha. ठीक है? So now we know what is the sum of the roots, alpha plus beta plus gamma. This goes to 0 because we have the sum of the roots is 0 here. And taken 2 at a time, we have q. So it is minus 6q. Very easy to understand, just a few changes and making it in the form of sum and product of two roots at a time. Let's move to the next question. Let me erase the solution once. Okay. So now let's see the other question. Let us just take the question that we're doing. We'll just get an idea. We did this, right? So let's go over this. Form a cubic equation whose roots are greater by 1, greater by unity than the roots of this. Okay. So again, very easy. We have alpha plus beta plus gamma is equals to 5. So alpha dash plus beta dash plus gamma dash would look like 8. Right? It's very easy. I think we can leave this question. If it comes about, I'll come at come to it later on also. Right? Yeah, we can simply put the values and get answers. Yes. Okay. So alternate method, if you see the alternate method of the question, this is also very nice. That if we take y is equals to x plus 1, so x get y minus 1. So we put y minus 1 in the equation and we get the complete equation right. Let's do another question. Find the sum of the squares and sum of the cubes of the root of this. So sum of squares look like alpha plus beta plus gamma's whole square minus 2 times of alpha plus beta plus gamma alpha. And if we are talking about sum of cubes, we have a theorem here. This is the theorem. Very easy to solve. Okay. I'll give you a minute to read through it if you want. You can read through it once. Then excuse me. So did you read through it? It's very basic representation of applications of identities. So the identity that we used here is alpha cube plus beta cube plus gamma cube minus 3 alpha beta plus alpha beta gamma plus 3 alpha beta gamma. And this is a theorem, right? So we have used this. Moving to the next part, let's see what do we have here. If alpha, beta, gamma, and delta are roots of the equation 10 of pi by 4 plus x is equals to 3 of 3 tan 3x, then find the value of this. Okay. So again, they have splitted the whole equation in terms of 10x and putting 10x is equals to y, then solving to get the result. Okay. So we get the result and this gives us a cubic, like biquadratic equation. And now we know the sum is 0 because there is not a cubic term here. Very simple direct question. Nothing to think about. You just had to remember your trigonometric equations and their expansion. So we had covered trigonometric equations and their expansion in previous lectures. So you can check that out and you'll get to know. So what theorem are we using here?
tan 3x is equal to 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square x. And one more is tan of pi by 4 plus x is equals to 1 plus tan x upon 1 minus tan x. Very easy to remember theorems, nothing out of the world. Okay, now moving on. Let's see what do we have. We did this also. We have done this also. Let's move on to another question. Find the number of quadratic equation uh, with real roots remain unchanged even after squaring their roots. Okay. So we have an equation ax square plus bx plus c is equal to 0. And let's write ax plus bx plus c for a moment and ab any other constant. So let's take this a dash and b dash and c dash. Okay. So what do we have? That the quadratic equation does not change. So right, alpha plus beta should equals to alpha square plus beta square, and alpha beta should be equal to alpha square and beta square. So what do we get here is, first thing we get is alpha beta is equals to 1, right? Then we get alpha 1 by alpha is equals to alpha square plus 1 by alpha square. How do we solve that? Alpha square is equals to a whole square minus 2. X is equals to x square minus 2. So we get x square minus x minus 2 is equal to 0. X minus 2, x plus 1 is equal to 0. So we get alpha 1 by alpha is equal to 2, or alpha plus 1 by alpha is equals to minus 1. This gives me alpha square. So what do we get? Alpha square minus 2 alpha plus 1 is equals to 0. So this gives me alpha is equals to 1. And let me just check this. This does not give me a real root, guys. It has roots of omega and omega square, where omega and omega square are complex numbers. So what do we get? Alpha is 1, right? We solve the complete equation. Okay, moving on. What do we have? Transformation of equations. This is also very important. This method can really help you solve a very difficult question, that if we transform the solution according to ourselves, then we'll get the answer. So let us see. इसमें दे रखा है कि we now list some of the rules to form a equation whose roots are given in terms of roots of another equation. So let's see. क्या दे रखा है कि let the given equation be, okay, general form of the equation has been provided to us. And now what do we have to do is, इसमें हमें क्या करना होगा आगे? हमें फर्स्ट रूल फॉलो करते हैं. तो फर्स्ट रूल है टू फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर k times the roots of the equation. So replace x by k. ठीक है. ये जस्ट अभी हम रीड करते हैं इस रूल्स को एंड देन देखते हैं कैसा होता है सोल्यूशन. ओके, नेक्स्ट दे रखा है टू फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर नेगेटिव. अच्छा ठीक है. तो हमें दे रखा है कौन कौन सी कंडीशंस पे कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है. तो पहला दे रखा है कि अगर हमारे जो रूट्स है वो k टाइम्स है, तो हमें क्या करना है? सिंपल है कि आपका जो x डैश है, देखो, अगर आपको दे रखा है कि आपका जो अल्फा डैश है वो k टाइम्स ऑफ अल्फा है, तो आपको पता है x इज इक्वल्स टू अल्फा था. बट नाउ अब x की वैल्यू हो गई है, x को रिप्लेस करना है ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई है? अल्फा डैश बाय x. x अल्फा की वैल्यू क्या हो गई है? अल्फा डैश बाय k. तो आपका नया नया x क्या बन जाएगा? x बाय k. एज सिंपल एज दैट. अगर रूट्स k टाइम्स है तो वो k बाय x हो जाएगा. अगर who's नेगेटिव ऑफ द रूट्स, देन आपको x को क्या करना है? माइनस x से रिप्लेस करना है.
to form an equation whose roots are negative of the roots, then okay. So in rule one, y is equals to kx and hence is equals to c. Yes, we have changed. कैसे करते हैं इसको? Y is equals to kx, तो x क्या हो जाता है अपना y by k. सो हम रिप्लेस करते हैं x को y by k के और नई इक्वेशन बनाते हैं. तो अपना यहाँ पे आप x को y by k से रिप्लेस करो, ये x by k से रिप्लेस करो, इट डज नॉट मेक अ मच ऑफ डिफरेंस, इट रिमेन्स द सेम, राइट? नाउ मूविंग ऑन, अगर हम चाहें कि अगर आपके जो दूसरे रूट है वो k टाइम्स मोर है, तो हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे? अपना y क्या बन जाएगा? x प्लस k. सो x क्या बन जाएगा? y माइनस k. एज सिंपल एज दैट. तो फॉर्म अ इक्वेशन whose roots are reciprocal of the roots. तो y क्या बन गया? 1/x. तो x क्या बन जाएगा? 1/y. एज सिंपल एज दैट. रूट एक्स स्क्वायर कर दिया है तो अपन रूट रिप्लेस कर देंगे. तो यहाँ पे दे रखा है फॉर इंस्टेंस टू फॉर्म अ इक्वेशन whose roots are squares of the roots of this. यस, तो हमें रिप्लेस करना है उसको. नेक्स्ट सिक्स्थ रूल है टू फॉर्म अ इक्वेशन whose roots are the cubes of the roots. So 1/3 कर देंगे. Nice. So these are the basic rules that we follow. I give you a minute to read through it. So did you read through it? I hope that clears up the confusion if was there any. कोई भी confusion हो तो आप comment down कर सकते हो. I'll try to solve the problem there itself. So this was the first part. Now moving on, let's see what the other part says. Condition for. Okay, so talking about condition of more than two roots, how do we solve this? Okay, so for a quadratic equation to have more than two roots seems like unreal ना. मतलब सुनने में अजीब लगता है ना कि दो quadratic equation है तो more than two roots कैसे हो सकते हैं? But there are cases when there are more than two roots also for a quadratic equation. वो equations को हम क्या बोलते हैं? वो properties होती है basically. These are properties. I'll tell you how. So let us see. What do we have here? Identity. Yes, my bad. These are for identity. अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आइडेंटिटी है तो उसके दो से ज्यादा रूट्स हो सकते हैं. ठीक है, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक इलिस्ट्रेशन से समझते हैं अपन इसको कि व्हाट डू वी मीन बाय आइडेंटिटी. सो हमें दे रखा है दैट इफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस वन एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस थ्री इज एन आइडेंटिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. सो आइडेंटिटी में क्या होता है ना, वेरिएबल्स जो होते हैं ना वो खुद जीरो हो जाते हैं. क्या होता है? जीरो. सी इफ देयर इज अ प्रूफ. अभी अपन देखते हैं कि आइडेंटिटी अपन ने कैसे बोला. अगर तीन रूट्स है, चलो फॉर एग्जांपल मोर देन टू है, तो विल टेक अ केस ऑफ जब हमारे पास तीन रूट्स है. तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तीन रूट्स है तो वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन द इक्वेशन. और फिर हम जब इनको सॉल्व करते हैं, सो व्हाट डू वी गेट इज दैट ए इज और डिस्टिंक्ट रूट्स है, राइट? सेम रूट्स नहीं है, डिस्टिंक्ट रूट्स है तीनों. तो क्या होगा? ए जीरो हो जाएगा, बी जीरो हो जाएगा और सी जीरो हो जाएगा. यानी कि
आइडेंटिटी बन जाएगी। अब इस केस में देखते हैं, अगर अपने को दे रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आइडेंटिटी है, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस वन को जीरो कर देंगे, ए माइनस वन को जीरो कर देंगे और इसको जीरो कर देंगे। और इन तीनों से हमें कॉमन वैल्यू मिल रही है, ए इज इक्वल्स टू वन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the equation is satisfied for all x is equals to real, then find the all possible ordered pairs of a comma b। अब ये भी एक नया तरीका हो गया आइडेंटिटी को लिखने का। अगर सेटिस्फाई कर रही है कि इक्वेशन सारे वैल्यूज ऑफ x को, मतलब वो एक आइडेंटिटी है, और यानी कि उसके जो x वेरिएबल्स होंगे वो होंगे जीरो। अगर हम इसको एक्सपैंड करके लिखे एंड कलेक्ट करें वेरिएबल्स को, सो व्हाट डू वी गेट, a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3b माइनस 1x प्लस 3b माइनस ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। अब इनके सबके कोएफिशिएंट जीरो हो जाएंगे, तो a प्लस बी जीरो हो जाएगा, 2a प्लस 3b माइनस वन जीरो हो जाएगा, एंड देन कांस्टेंट टर्म भी जीरो हो जाएगा। तो इनमें हमें जो कलेक्टिव वैल्यूज मिलती है वो हम ज्वाइन कर लेंगे सॉल्यूशन को, एंड देन वी गेट द वैल्यू। ओके, solve inequality. This is also an important topic for quadratic equation, so let's see where does it go. पहला आता है इंटरवल। गिवन दैट e of x is equals to x minus a into x minus b into x minus c into x minus d, और ये सब ग्रेटर देन जीरो है। इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम बहुत मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको इंटरवल्स पता होने चाहिए कि इंटरवल्स क्या होता है। तो पहला इंटरवल होता है ओपन इंटरवल, फिर होता है क्लोज इंटरवल। दो टाइप के इंटरवल होते हैं, ठीक है। अब इनको भी हम बाइफरकेट कर सकते हैं। कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं, या तो पूरा ही एक क्लोज इंटरवल है, या तो पूरे ही ओपन इंटरवल है, या तो एक तरफ से क्लोज और एक तरफ से ओपन है, या तो एक तरफ उल्टी साइड से ओपन है और उल्टी साइड से क्लोज है। यानी कि क्लोज है दोनों साइड से, ओपन है दोनों साइड से, एक तरफ से क्लोज एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्लोज है। ठीक। अब आपको ओपन और क्लोज का मतलब पता होगा। क्लोज का मतलब, अगर क्लोज ए बी लिखा है तो आप ए एंड बी को भी इंक्लूड करोगे उस इंटरवल में, और ओपन ए बी लिखा है मतलब ए और बी को नहीं का इंक्लूड करना है उस इंटरवल में। और यहाँ पे लिखा है क्लोज ऑफ ए एंड ओपन ऑफ बी, मतलब आप ए को कंसिडर कर सकते हो, बी को नहीं कर सकते। ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इंटरवल्स की, क्या कहते हैं इंटरवल। लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, that in an inequality any number can be added or subtracted from both sides of the inequality। basic rule of inequality, अगर सम और ऐड करना है दोनों साइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, terms can be shifted from one side to another of the equality, the sign of inequality does not change। हाँ, बट अगर आप कोई नेगेटिव टर्म को साइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, then the sign of the inequality might change। moving on, what do we have? Yes, non-zero positive number, then the sign inequality does not change. But if we multiply it with a non-zero negative number, then the sign of the inequality would change। Right? That is really important to understand कि अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है दोनों साइड पे, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा था इनइक्वालिटी एंड आई एम मल्टीप्लाइंग -2 हियर एंड -2 हियर, देन द इनइक्वालिटी वुड चेंज, राइट। ठीक है। तो डी पॉइंट देखते हैं। In the inequality, if the sign of the expression is not known, then it is not to be cross multiplied। Similarly, without knowing the sign of an expression, division is not possible, right? अगर किसी एक्सप्रेशन का हमें साइन नहीं पता है कि या वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, या किस इंटरवल पॉजिटिव और किस इंटरवल पे नेगेटिव है, फिर हम उसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं करते हैं, क्योंकि देन वी आर नॉट अवेयर ना कि पॉजिटिव होगा तो तब तो ठीक है, बट अगर नेगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होना था, तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। दैट इज व्हाई अगर एक्सप्रेशन का साइन नहीं पता हो, तो वी डू नॉट मल्टीप्लाई इट टू ईदर ऑफ द साइड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें दे रखा है x-2 और x-5 ग्रेटर देन 1 है, तो हम x-5 को अपोजिट साइड नहीं भेज सकते, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर कि x-5 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर x की वैल्यू 1 होती है तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, सो वी आर नॉट अवेयर। सिमिलरली, अगर यहाँ पे दे रखा होता x-2 और x-5 का होल स्क्वायर,
तब मैं इसको सेंड कर देता वहां पे, क्योंकि एक स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट? तो हमें पता है कि क्या वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है? नहीं रहेगा। Okay, so talking about solution of an inequality, the solution of an inequality will always be an interval. It will never be a. It can be in some cases a constant term, but in more than one cases, like more commonly, it would be an interval. If we take first point into consideration, what do we have here? Yes, the first point that we have here is right. All the terms present in the inequality as the linear factors in standard form. Okay, जैसे कि इस फॉर्म में लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, ऐसे फॉर्म में लिखना होता है यार। मतलब आई कैन शो यू इजियर वे आल्सो, सी हाउ डू वी डू इट। कि हमें अगर कुछ दे रखा हो, एक बार रीड कर लेते हैं। आई गिव यू अ मिनट और टू टू रीड द स्टेप्स फर्स्ट बाय योरसेल्फ, बिकॉज आई हैव रेड द स्टेप्स, बट आई विल प्रोवाइड यू अ डिफरेंट सॉल्यूशन, बट यू रीड थ्रू सॉल्यूशन बाय योरसेल्फ फर्स्ट। एक बार खुद से पढ़ के देखो। आई गिव यू अ मिनट ऑफ टू। It is 6:40 right now. We'll continue it. I'll not give you the correct time. I'll give you 2 minutes. There are 2 minutes more to read this. Read it once. Okay, so you read it. What does the inequality suggest? So let's see. अगर हमें दे रखा है this, so इसको हम कैसे करेंगे? अगर ऐसा कर दिया and cut off कर दिया, so we can like cancel out common factors from both sides, but we have to consider that कि वो zero नहीं हो सकते। तो हम इसको कैसे solve करते हैं? I'll tell you. ओके, हमें ये फाइंड करना है ना। फॉर एग्जाम्पल तो हमें दे रखा है, सो व्हाट वी डू, एक नंबर लाइन पे हम प्लॉट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे नेगेटिव है -1 है, फिर 12/7 पॉजिटिव है, और फिर 3 है। ये हमने एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो आपको समझना आप समझ सकते हैं। एंड देन वी स्टार्ट यहाँ से, दिस दिस दिस, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एज सिंपल एज दैट। So comparing all the brackets separated with 0, we can find the range of values of x. So at x less than 0, you might want to find the range of x. लेस देन ना, तो हाँ, एक तो यहाँ पे लेस देन होगा और एक यहाँ पे होगा। ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर satisfying the equation this. Okay, so what do we have? Let's again take the number line and place the numbers. We have -1, we have 2, 3, 4, and 5. So we'll start with positive. For 5, it is an odd number, so we'll keep going. For 4, it is an even number, so we will not move. From 3, it is an even number, again, we won't move. At 2, it is an odd number, so we will move. At -1, it is an odd number, so we'll move. So plus, minus, 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 plus, minus, minus.
So we have to find it for negative, right? So what do we get? This. Yes, very easy to understand. Let's do another. See, if you guys understand what I'm doing here is, अगर लीनियर फैक्टर के फॉर्म्स में आ गए हैं ऑलरेडी, सी वन मेथड इज व्हाट इट हैज बीन एक्सप्लेन टू यू इन द थ्योरी पार्ट. यू मस्ट हैव रेड इट. अगर आपने वो पढ़ी, आपको वो समझ आते हैं तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं. बट आई वाज नॉट टॉट दिस, और मुझे वो इतना इजी लगता भी नहीं उससे सॉल्व करना. तो आई हैव अ डिफरेंट मेथड फॉर माई सेल्फ. तो इसमें हम क्या करते हैं, लाइक पहले अगर हमने लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया है अपने क्वाड्रेटिक या कोई भी एक्सप्रेशन को, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को, तो हम उसमें क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं अपने फैक्टर्स को. तो अगर दे रखा है हमें कि जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, x-3 x+1 x-12/7, तो हम क्या करते हैं, -1 को 12/7 को उसी को प्लॉट कर देते हैं रियल नंबर पे. और स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, ऊपर से आते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर आते हैं, हर एक फैक्टर पे मॉड्यूलेट करते रहते हैं. बट मॉडरेट कब करते हैं, जब उस फैक्टर की पावर ऑड होती है. अगर वो इवन होती है देन वी डोंट चेंज आवर साइन. फॉर एग्जांपल इन दिस केस, यहाँ पे 4 की पावर का जो फैक्टर है, x-4 की पावर 200 थी, तो वहां पे हमें चेंज या मॉड्यूलेट करने की जरूरत नहीं थी. सो वी कंटिन्यूड विद आवर लूप. तो हमने कंटिन्यू कर दिया एंड वी गेट द वैल्यूज की जहाँ पे नेगेटिव है वो आ गया इंटरवल. एक और एग्जांपल लेते तो आई थिंक यू विल गेट मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. सो वी हैव -3 -2 1 एंड 4. तो पॉजिटिव वाला साइड चाहिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो पॉजिटिव वाला कौन सा हो गया, -∞ to 3, 2 to 1 एंड 4 to infinity. वेरी इजी. नाउ नेक्स्ट वी हैव, लेट अस इरेज दिस. Next we have is x square, x+1 and x-3 whole square. So we have is -1, 0 and 3. See, 3 पे ऑड है तो नहीं करेंगे, चेंज कर लेंगे. 0 पे इवन है तो चेंज नहीं करेंगे. 1 पे ऑड है तो चेंज कर लेंगे. सो प्लस माइनस माइनस प्लस. सो ये हो जाएगा -1 to 0 यूनियन 0 to 3. जीरो ले सकते हैं क्या, जीरो ले सकते हैं, बट लेस देन का इक्वालिटी है तो नहीं लेंगे अपन. अपने पास मतलब इक्वालिटी नहीं है, लेस देन का साइन. अगर इक्वालिटी होती तो अपन जीरो भी ले लेते, बट इक्वालिटी नहीं है. इसमें क्या चेक करना होता है फैक्टर वाले पॉइंट्स पे कि वो सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तब अपन डिसाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव, तो पहले हम इसको चेंज करेंगे. इस इक्वालिटी को चेंज करने के बाद हमारे पास क्या बन के आता है, ये बन के आता है ना. हम इसको सॉल्व करते हैं. अपने पास आ रहा है 13/7 4 और 3. तो 13/7 इज लेस देन 2. तो ये जाएगा 13/7 3 एंड 4. सॉरी, माइनस प्लस. तो हमें ग्रेटर वाला लेना था तो अपन ये वाला लेंगे. अब हमने वैल्यूज पुट करके दे सकते हैं, 4 3 और 13/7. तो उससे क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट डिसाइड हो जाएगा. राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव दिस. तो इसके लिए हमें इंडिविजुअल करनी पड़ेगी. हमारे पास दो सेट्स ऑफ, आई गिव यू सम टाइम. इसका सॉल्यूशन मत देखिए आप, एक काम करिए, आई गिव यू सम टाइम एंड सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ फर्स्ट. इज द क्वेश्चन विजिबल? आई सपोज इट इज विजिबल, राइट? इसको आप एक बार खुद से करके देखिए. आई हाइड द क्वेश्चन फॉर यू, लाइक I'll hide the solution for you right now. And try doing this for by yourself. I'll give you a minute or two. So आप खुद से करो ये.
तो डिड यू गेट इसको कैसे सॉल्व करना है? तो वन ऑफ द इजियर वे ऑफ सॉल्विंग दिस इज कि हम है ना दोनों जो इनइक्वालिटीज है उनको सेपरेटली लेके सॉल्व कर सकते हैं। कि पहले हम ले लेते हैं राइट हैंड इनइक्वालिटी एंड देन लेफ्ट हैंड इनइक्वालिटी। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो पाती है तो solutions will take the summation of both the solutions. I'll just open up the solution for you guys. Just give me a minute. Okay, so the solution looks like this, right? So let's go through the solution by ourselves. What does the solution say? That we take inequality one by one. So let's take inequality one by one and check. In the first case, we have x square plus 1 is always positive, right? Because x can go from any real value to any infinity, but at square it would be always positive. So x square 1 is positive, so we can multiply it at both sides. So on multiplying it on both sides, we get this inequality. I'll highlight it rather. This inequality. So here, if d is less than 0 and a is positive, then f of x is always positive. So this is always positive for real. So हमें एक inequality यहाँ से मिलती है कि हर एक x के लिए positive है, तो ये inequality हमेशा चलेगी. Now moving on to the next, we have कि 2 वाला inequality, right? 2 वाले inequality पे we have this. तो अगर हमें इसका नेगेटिव निकालना है तो ये हो जाएगा +1 और 6 ऐसा. तो नेगेटिव की इक्वालिटी जाएगी 1 और 6 क्लोज ब्रैकेट, because there is an equality sign as well. This. Why we have taken intersection here? Can you tell me? Because हमें दोनों के ऐसा चाहिए जो दोनों पे एप्लीकेबल हो, राइट? तो वहां पे तो हमें एक्स रियल दे रहा था, बट यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा था, तो इंटरसेक्शन ऑफ 1/6 विथ रियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1/6, राइट? So we can all write 1, 6 only. Now moving on to the next, we have this. So इसको भी एक अलग तरीके से कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 3x को y ले लिया तो हमारे पास एक नई इक्वेशन हो जाती है, उसको सॉल्व करके कर सकते हैं. There are multiple ways to solve this question, guys. Like एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके से होते हैं. इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, और आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा दैट व्हाट इज द इजीएस्ट वे आउट, एंड दैट इजीएस्ट वे आउट शुड बी योर पर्सनल इजीएस्ट वे आउट. For you, what is the easy way out? Okay, now moving on to the next part, we have condition for common roots. Consider that two quadratic equations, at least one root is common. So what do? We apply the value of alpha in both of those equations, and by cross multiplication, what do we get? These are the values that we get. Okay, this is the condition for the common root. And if both roots are common, they have to be similar, that is, they have a common factor of k. Now determine the values of m for which the equations may have a common root. So we take alpha as the common root, then we solve for m. We get two values of m. Cool. Nothing out of the box, it's very simple. Again, let us check what is the cross multiplication method. Okay, I'm not aware of this method. I'll have to search through it once. They must have taught me the details, but I would not have found it that fruitful. You can simply eliminate alpha by yourself also. You'll get a common value and equation in terms of m. So वैसे भी solve कर सकते हो. Next we have maximum and minimum value. We have already done that in differentiation, so that you can easily do. We have done the maximum and minima, right? Now we have to find the range. Range
quadratic equations and within two variable. Okay, this topic is something that can take some time. Number of roots. Okay, so only the major topic that is left for us to discuss is the uh, nothing actually. We have discussed all the topics, right? Location of the roots we have discussed. Quadratic expression in two variables is something that is we have to discuss, but we'll see if we have further time for that. So let's wrap up the session and see if we have another session for quadratic equation. But the questions that we covered here were really diverse, and I hope you get an idea of it. I'll try to put the PDF link and you can solve the questions from there itself in the comments, right? Okay, so let's wrap up the session. Thank you, everyone. Bye.